अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम वर्क एनर्जी थ्योरम पे कुछ डिस्कस करेंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है और हम इस थ्योरम को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इन आवर डेली लाइफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, वी हैव इट्स डेफिनेशन that the net work done by all forces acting on an object equals the change in kinetic energy. Either mathematically, I have mentioned in the formula, the net work done is equal to change in its kinetic energy. Kinetic energy is equal to final minus initial kinetic energy. अब इसके डेली लाइफ में आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वी हैव अ breaking a car. We have an example. I want to describe this example as when a driver slams on brakes, the force of friction between tires and road acts opposite to the motion. Means that will be the negative work done there, removing kinetic energy to stop the vehicle. तब जो आपकी गाड़ी होती है या कार होती है वो it will stop by removing the kinetic energy. दूसरा, आप डेली लाइफ में इसका ये एग्जांपल ले सकते हैं, लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट. जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हैं, लिफ्टिंग अ हैवी suitcase increases its gravitational potential energy. Work is done by the person against gravity to change the object's speed or position, often leading to a change in mechanical energy. और दूसरा एग्जांपल है हिटिंग अ बेसबॉल. यानी कि ये सारे हमने एग्जांपल लिखे हैं डेली लाइफ में. इसके जो एग्जाम्पल्स हैं हमने वो इधर मेंशन करने हैं. पहले हमने एग्जाम्पल लिखा ब्रेकिंग अ कार का. दूसरे हमारे पास एग्जाम्पल है लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट. सो बेसिकली दीज एग्जाम्पल्स really defines the work energy theorem, and it is quite simple, and it has a lot of work in daily life. कैसे हम यूज़ करते हैं एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को, वर्क डन कैसे, मतलब इसकी कंडीशन जो रिलेशन है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इस बिहाफ से आई हैव एन वीडियो, एनिमेटेड वीडियो टू शो that how this work energy theorem basically works. If the speed of the body increases, then the work done is positive. Thus, when speed of the body increases, kinetic energy also increases. When force is applied, if the speed of the body decreases, then the work done is negative and is said as kinetic energy decrease. The energy related with work done, W, by the force that disappear or removed, is transformed into kinetic energy. Work done, W, is equal to difference in kinetic energy. Delta KE is equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy.